if someone is moving along according to this equation, it means that is an equation of projectile. Please copy all these things. If there is any doubt, oh, would you please copy all these things quickly? We have to wind up the class because we are running out of time. So after copying this, you can leave the class. Kick does it hit the ground? Very simple question. You can solve it by using the formula. जो solve कर सकते हो कर लो. It's very easy. और ये question अब तो आपको आना ही चाहिए. Projectile is projected in this direction at an angle of 45. Then it's a path, means I'm just drawing the diagram for making you more clear. The projectile will move in this direction. We have to find time of first find the time taken by the ball to strike the ground again. Are you listening me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Good. Now, the first part of the question. Here A. It is मैंने वीडियो भेज दिया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं. मैं आज आपको भेज दूंगा वीडियो. क्या बेटा? कौन सा वीडियो भेजी सर आपने? इसी चैप्टर की भेजी है बेटा, मोशन इन प्लेन. मोशन इन, देखो एक्चुअली होता क्या है बेटे, क्लास में हम उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हैं, तो मैंने वीडियोस में अभी 2 ही वीडियो बनाया है और वो वीडियो है मोशन इन प्लेन का. प्रोजेक्टाइल में अगले वीडियो में भेजूंगा. आप समझ सकते हैं मोशन इन प्लेन में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए थे, मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूड कर लिया है ना. तो ऑटोमेटिक इट्स वेरी सिंपल कि when we have time we must have to include some more questions. इसलिए मैंने वीडियो में हमेशा ही ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं. This is given and now what we have to find? We have to find time taken. What is the formula for time taken? Formula for the time. 2u sin theta by d. Very good. Sin theta by z. It is the formula. Just we have to put the value. 2 into u is 20, and sine theta, that is sine 45, divided by 10. Now it is 4 and 1 by root 2, that is 2 root 2. Means time taken is 2 root 2 seconds. Is it clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपसे इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी नहीं होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो बेटा इट इज नीडेड टू रिपीट द क्लास. क्या इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अब बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Good. Find the maximum height. Just we have to use the formula for maximum height. Yes, sir. Good. Maximum height is equal to, what is the formula? Anyone can? U square sin square by 2g. Very good. U square sin square by 2z. U square sin square theta. 2g. Good. And now just we have to put the value, that is 20 square into sin 45 square. Sorry, square. And divided by 2z. 2 into 10. Now simply if we solve, it will be 20 into 1 by 2. आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं and it will be 10 meter. If we see the third part of this question, okay, question number 3, C.
How far from the kick means you have to find the range. How far? Sir. Yes, we have to find range means r equal to, just we have to apply. Such type of questions You can sine be theta solved by star. using the formula u square sine 2 theta. 40 meter. 2 theta upon g. Now it is 20 square into sine 90. I have taken 45. 245 will be 90, so it is sine 90 upon 10. What will be it? 40 meter. I hope this is very simple question and you can solve it. Okay, I'm just giving you 10 seconds. Please solve it. कर लिया सर सो हाँ बेटे, जो नहीं किया उसको बस 10 सेकंड दे रहे हैं क्या? सर सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना. सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन बेटा ढूंढना पड़ेगा. चल एक बार तो क्वेश्चंस जो है अपने पास वो देख लेते हैं. वो हाँ, सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन आज भी है. डोंट बॉदर. मुझे पता रहता है कि लास्ट में आपने कहा था करवाऊंगा. हाँ हाँ, सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन आज भी है, मुझे याद आ गया. क्योंकि सैटरडे को हमने ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं किया, वो क्वेश्चन जल्दी में हो गया. हमारे पास सिर्फ 2 मिनट टाइम था और नेक्स्ट क्लास भी होना था. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व. ये भी काफी इजी है. These all questions. अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के पास एससी वर्मा बुक है? यस सर, है सर. गुड. वो आपका ये है सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है? सर जो बुक होती है वही है सर. सॉफ्ट मतलब कॉपी भी है पीडीएफ. हाँ, पीडीएफ के फॉर्म में है आपके पास या हार्ड कॉपी है? मेरे पास तो हार्ड कॉपी है. ओके, वेरी गुड. जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे से सॉफ्ट कॉपी ले सकता है बेटा. सर पर वॉल्यूम फर्स्ट है सर, अभी टू नहीं होता है. तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एससी वर्मा बुक, जस्ट आस्क मी टू. ओके, see the next question. A helicopter on flood relief mission flying horizontally with the speed u. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखे. मुझे ही जब छोटा दिख रहा है तो आप लोग को भी छोटा दिख रहा होगा. जस्ट a helicopter on flood relief mission flying horizontally with the speed u. Speed is given, that is u. At an altitude h, has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stand in the vertical plane of the helicopter. See, it is little bit new for you, but you can solve it if you try. मैं क्वेश्चन को यही रखता हूं. There is a victim who is standing on the ground. There is a person, suppose this is the person. I'm just taking, this is a person standing here and a helicopter is here. मेरे टाइम पे आया कीजिए. आप समझते हैं क्लास डिस्टर्ब होता है. A person is here and the helicopter is flying at h height. I'm just taking h height. This is the height h, and here is the helicopter. I'm drawing a helicopter. Suppose ये मेरा chopper है, suppose करो. It is the helicopter and it has to drop a food packet. Okay, तो
Where should the food packet be dropped? आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है? Just try to understand. At what distance from the person? At what distance from the person food packet be released? Means this distance you have to find. Person से कितने distance पे हो कि that will catch the food packet. Okay. See, this helicopter is flying in this direction with the speed of u and height is h. Now see, just we have to divide the motion in two parts, horizontal motion and vertical motion. Horizontal and vertical. If we see the horizontal motion, the initial velocity ux, I am taking ux in the horizontal direction, ux is u, but uv means vertical direction में initial velocity is 0. Do you have any problem? Do you have any problem, Bete? No, sir. Good. Since the helicopter is flying in horizontal direction, so horizontal velocity is u and vertical velocity is 0 because it is dropped with this velocity. Acceleration in x direction is 0 and acceleration in y direction is z. Downward direction, I have taken downward direction positive. Now, distance the body has to cover, suppose this distance is x. Then in horizontal direction, the distance covered, that is sx, is x, means distance in horizontal direction. And distance covered in vertical direction is h, that is given. Packet has to reach vertically from this height to this, and horizontally it has to reach this. Now just we have to formulate the equation. Sx equal to ux into t plus a half at square, and that is 0, a is 0, so we can write here. This term becomes 0. Similarly, sy can be written as uy into t plus half at square. A is ay, and here it is 0 plus half into z into t square. I hope this is clear, and this is given. This is h. So h can be written as 1 by 2 zt square. So we can calculate time from this expression, and that is t equal to 2h upon z